Good morning, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is 7th of October, the first weekly expiry of this month, and the market has been already super volatile. And currently, we are looking at a drawdown of somewhere around 3 points. So 5,300, 5,000, around 5,000 quantity ka sizing hai. So we are down by 15k, which is around 3 points. So currently, all my calls are at 17,900 and some of my puts are at 17,750 and maximum of my puts are at 17,700. So the idea is if the 750 ka put reach somewhere around 20, I'm going to square them off and I'm going to take them back to 17,700, and from there it's 17,700 and 900 ka strangle without much adjustments. And at the same time 17,900 पे I'll try to hold on to these 17,900 calls because 17,878 levels यहाँ पे जो level है 17,880 levels जो है, so which should act as a very good resistance for the day. And already 8 million contracts built up हुआ है 17,900 पे, and 17,700 पे there are already a good 5 million contracts, around 5 million contracts 17,700 पे build up हुआ है. So that prompts me to hold on to these 17,900 calls as long as possible, and I'm going to be only moving the puts either away or close to the strike depending upon how the market moves. And I couldn't make videos for the long time now because the last video I think my last video was out on Friday. उसके बाद मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया, and the main reason is over the weekend I was down with fever, and Monday भी मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो Monday I didn't take any positions. Tuesday मैंने थोड़ा positions लिया and I think I updated that in the community section. And again कल because of some घर का पूजा था and because of that reason I didn't take any positions. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, but as of now we are down slightly under a point. जो कॉल साइड आईवीज है वो कूल ऑफ हो रहा है, एंड मैं आई बी वेटिंग टिल दिस रेजिस्टेंस 17,800 लेवल्स ब्रीच होने तक मैं क्लियरली वेट करूंगा, एंड उसके बाद 17,750 को मैं आई ट्राई टू ईदर push it away or take some additional credit from 17,850. I'll see, like whichever works out, like I'll do that. I'll keep you guys posted. As of now the time is 9:43. As soon as we opened at 17,810, we dipped to 17,765, almost 50 point का down move आ गया, and the entire 50 point down move was negated by a single green candle. So bulls are so impatient, they're not even sparing a single dip to not buy the markets. So every dip they are buying the markets, which is kind of concerning, because at one point when these bulls give up, we'll see a rapid 5 to 10% correction new aa jayega, and those days the non-directional sellers will be thrashed because VIX bhi काफी बढ़ जाता है, and today the VIX is down by almost 4%. कल जो US debt ceiling का भी मतलब issue sort out हो गया लगता है, at least for the time being. So because of that there is some sort of optimism across all the global markets. देखेंगे. We are still down by around just less than 3 points, and the risk tolerance for the day is somewhere around 35 to 40k. So 35 to 40k risk tolerance रखेंगे, and when that happens, so I'll try to collect peanuts and I'll try to make back whatever I've lost. So पूरा risk covers हो जाएंगे, and तब तक कुछ करने के लिए है नहीं. So what I've done is I have shifted a partial quantity of my strangle into a 100-point strangle, and remaining are at 200-point strangle. So I have a 200-point strangle and a 100-point strangle with split quantities. मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? Because I'm expecting markets volatility. ठीक है, तो मार्केट में जब भी मार्केट volatile होता है, let's say the market falls for 50 points, तो तब मुझे एक काफी बड़ा MTM देखने को मिलेगा, because the 17,700 put option it can easily spike to 16,17, and इसमें है ही कितना बचाने के लिए? कुछ नहीं है. But at the same time, if I keep all my calls at 17,900 and if I split my puts between 17,700 and 17,750, then मैं appropriate reversal risk भी लेने का होता है. And similarly the case with 17,850. अगर मैं 17,850 calls and 17,900 calls थोड़ा बहुत split करूं और सारे puts को 17,700 पे split करूं, तो then अगर मार्केट ने इस डे के हाई तक भी आ जाता है, देन ऑल्सो आई बी लुकिंग एट अ गुड 4, 5, 6 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन. सो दिस स्टेप of me taking a 100-point strangle
though it is a high risk high reward proposition, it's gonna cushion me from any MTM swings. वो कैसे? अगर मैं ऐसे इसको भी छोड़ दूंगा तो of course this will give a bigger loss than what the 200 points triangle would give, but the idea is, look at this, मेरा stop losses कैसा है? 850 कॉल का स्टॉप लॉस मैं 1000 क्वांटिटी में 23 रुपीज पे निकाल दूंगा, ठीक है? 1000 क्वांटिटी 850 क्वांटिटी का, आई मीन 17850 कॉल का 1000 क्वांटिटी में 23 रुपीज पे निकाल दूंगा. तब क्या होगा? तब I have more put shots, aggressive put shots than the aggressive call shots. तो ये 1500 क्वांटिटी हो जाएगा, ये 1000 क्वांटिटी हो जाएगा. सिमिलरली इस पुट्स को 17750 पुट्स का भी 1000 क्वांटिटी कैसे है? 22 रुपीज पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है. लुक एट दिस. यहां पे 1000 क्वांटिटी निकाल दूंगा तो तब क्या होगा? इट विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ, आई मीन इट विल क्रिएट अ गुड सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस टू माई पोजिशन. सिर्फ मुझे पोजिशन को जितना हो सके उतना बैलेंस में रखना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल बायस. मुझे डायरेक्शनल बायस चाहिए ही नहीं, एंड आई विल डू एवरीथिंग टू मेंटेन द एंटायर पोजिशन इन अ बैलेंस. मतलब एक नॉन डायरेक्शनल, एक डेल्टा न्यूट्रल बैलेंस में रखने के लिए मैं जितना क्या क्या कर सकता हूं वो सब कर सकते हैं. क्या यही एक तरीका है करने के लिए? बिल्कुल नहीं. यू कैन डू इट इन 100 डिफरेंट वेज. ठीक है, आप इसको 100 डिफरेंट वेज में मतलब कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर risk appetite, depending upon what kind of aggressive positions or defensive positions you want to take, depending upon your view of the market. काफी ज्यादा चीज है, but for me this works the best क्योंकि मैं I feel like I'm in control of my positions. मुझे वो चाहिए. मेरे को जब तक, देखो मार्केट में there are so many things which are out of your control, but directionality, bias and how aggressive your position is definitely under your control. तो I feel that I'm in charge with this kind of a position. मतलब अगर आपको मैं जैसे जो बात कर रहा हूं अगर आपको थोड़ा complicated लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि once you start trading in this way you'll understand what I'm talking about. क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा बात काफी जेनरिक लग रहा होगा कई लोगों को, and once you start trading the same way that I do, you'll start getting the feel for my words. ठीक है, as of now a 100 points triangle and a 200 points triangle which are pretty equidistant and premium wise भी मतलब ठीक ठाक ही है. You may say that 1700 का कॉल सिर्फ 7 रुपीज है, 1700 पुट 10 रुपीज है. That is the natural extra demand, that is the natural extra IB that's present in the puts at all time, and that's the natural skew that we have towards the put side. Alright, the last 3 clips that I recorded, I forgot to connect my mic, and so the last 3 clips pretty much went in vain. So as of now the MTM is somewhere around 34k and मैंने hedges को पास में लेके आके तो quantities को बढ़ा दिया है. So now we are trading with 6300 quantity. That somewhere translates to 140 lots, 140 lots के बीच में कुछ है. So the idea is like we have our puts, all our puts, maximum of our puts at 17800 and some of our puts at 17850, and we have all our calls at 17900. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब मैं कॉल्स को भी थोड़ा ऊपर लेके आ रहा हूं. 1700 calls buy and 17, yes. तो अब मैं क्या किया, तो कॉल्स को भी 17850 पे लेके आ गया. सो नाउ आई हैव अ 17850 स्ट्रैडल विथ 20 लॉट्स एंड बाकी सब पोजीशंस 17900 एंड 17800, 100 पॉइंट्स ट्रायंगल के बीच में है. तो आई विल डिसाइड इफ आई वांट टू टेक एडिशनल क्रेडिट आफ्टर 240 के बाद मैं एडिशनल क्रेडिट लेना है नहीं लेना है वो देखूंगा मैं. तो नथिंग मच टू बी डन. आई मीन ऑफ कोर्स दी 17800 पुट्स में थोड़ा मतलब 4 रुपीज तक है प्रीमियम, बट दैट्स ओके. तो अगर मैं एडजस्ट करना है तो इन क्वांटिटीज को मैं मैनिपुलेट करके मैं एडजस्ट करूंगा. लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से द मार्केट स्टार्ट्स टू हेड हायर, तो अब तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इस 17850 का कॉल्स को मैं क्लोज कर दूंगा एंड देन आई विल गो बैक टू 17900 एंड ट्रेल ऑन दी 17850 पुट्स. एंड देन धीरे धीरे अगर 17800 पुट्स में कुछ बचा नहीं तो आई विल कीप शिफ्टिंग टू 17850 पुट्स. एंड एट द सेम टाइम अगर हम ऊपर नहीं गए, नीचे आना शुरू कर दिए, तो देन प्रोबेबली मेरा अप्रोच ऐसे रहेगा कि आई विल शिफ्ट मोर एंड मोर कॉल्स टू 17850, क्योंकि 17900 में अभी 3 रुपीज ही बचा है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है. सो नाउ वी आर लुकिंग एट एन आईवी स्पाइक. सब जगह पे मतलब आईवी स्पाइक हो रहा है.
almost पूरा strangle, the entire strangle gained around 1 rupee, 1.5 rupee gain हो गया. But yeah, essentially it's the same thing, guys. So the idea is to stay away from the markets, first thing, and the second thing is manage the risk in the direction of the market's movement, and the third thing is manage your MTM not going completely out of your control. जब तक अगर आप 2 o'clock तक अगर आप पॉजिटिव में भी है या स्लाइट नेगेटिव में भी है, so you stand a good chance of returning close to 1% at the end of the day. So the important thing is not to let your MTM slide way too much in the morning madness. अगर सुबह के वोलेटिलिटी में अगर आप immediately 0.5-1% तक अगर आप MTM लॉस देख लेते हो, then the whole day will be spent just recovering that loss. तो 2 o'clock तक stay as away as possible, try to get as little as possible, क्योंकि आपके पास बाद में opportunity होगी ही होगी to come closer and collect additional credits. Time is 3:20, सारे पोजीशंस मैंने क्लोज कर दिया है, एंड काफी वियर्ड मार्केट था बिकॉज till 3 o'clock the 17,800 call was trading at 21 rupees when the market was barely at 17,800. So the conviction of the entire markets collectively that the market is going to expire above 17,800, that too decisively about 17,800. So that kind of got negated. The bluff of the market got called, and immediately in a single minute, अगर मैं आपको बताऊं तो 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है, so 22 रुपीज से 4 रुपए को पहुंचा 1 मिनट में. Even like looking at the market's conviction, I was towards the market side, तो मेरे पोजीशन सारे काफी मतलब थोड़ा बुलिश रखा था मैंने, but in the end like the market just tanked down and nothing could materialize. It was a bit frustrating at the end of the day. So almost 2:30, 2:45 तक it was almost all right, but towards the end it's just like last 30 minutes का जो firefighting है, it just took maybe 3k in charges, but nothing productive that happened in the last 30 minutes of firefighting. तो कुछ हुआ नहीं है. 52k here and another around 2.5k there, so around 55k for the day. Nothing great, because इस point पे last में मतलब थोड़ा confusing लगा मुझे market, because the option prices were telling one thing and the market was doing the exact opposite. I tried to align with the option prices, but I got burnt when the down move happened. So another 7 minutes left, and वो 1800 का quantity का जो freeze limit है, it is being a pain in the ass, क्योंकि 4 बार एक ऑर्डर को 4 बार एग्जिट करके एंटर करने में ही मतलब टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, एंड आई एम लूजिंग अ लॉट ऑन स्लिपेजेस. सो या, that's my story for the day. Not exactly happy with how I traded, because wasn't such a hard market considering the fact that we stayed within a 100-point range, but 1% isn't such a shabby outcome, I guess. Expiry, I hope you guys also had a decent enough expiry, and yeah, I'll see you guys in the next video.